Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with a new part of technical terms in plant breeding. Starting with the next term, that is drought. Drought matlab सूखा. Inadequacy of water availability in quantity and distribution during the life cycle of a crop that restricts the expression of its full genetic yield potential. मतलब उसका yield का potential भी घट जाता है. ड्रॉट हार्डनिंग, अब उसको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा क्रॉप को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ जीनोटाइप टू ड्रॉट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सीड और सीडलिंग ट्रीटमेंट. तो हम लोग सीड और सीडलिंग ट्रीटमेंट का हार्डनिंग करते हैं ताकि वो की फील्ड में सर्वाइव कर सके. देन ड्रॉट रेजिस्टेंस, ability of a genotype to suffer minimum loss of yield in drought environment relatives to the yield in optimum environment. ठीक है, optimal environment में जैसे वो करे वैसा ही वो yield अगर ड्रॉट स्ट्रेस में भी दे रहा है तो दैट इज ड्रॉट रेजिस्टेंस. Duplication, occurrence of a chromosome segment more than twice in a diploid chromosome complement. The duplicated segment may occur in same या फिर different chromosome. Now early testing क्या होता है? Self pollinated crops, evaluation of performance of अर्ली सेग्रीगेशन जनरेशन मतलब F2 या F3 बल्क या फिर F3 F4 इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज इन ऑर्डर टू एसेस द वर्थ ऑफ प्योर लाइन, जिसको कि हम लोग आइसोलेट करेंगे. ठीक है, फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में एस्टिमेशन ऑफ GCA और SCA ऑफ प्लांट और प्रोजेनी अर्ली इन द प्रोसेस ऑफ इनब्रीडिंग मतलब जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी. Next is electrofusion, that is introduction of fusion between two protoplasts. कैसे? By exposing them to a very short, एकदम short, millisecond duration of high voltage current. ठीक है? Next is electroporation, that is introduction of DNA into cells or protoplasts by exposing them to a very short duration of high voltage electric current. और इसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा लेमा में छोटे छोटे पोज हो जाते हैं. ठीक है, ट्रांजिएंट पोज बन जाते हैं. Now, last for the day is emasculation, that is removal of immature anthers or androecium from a hermaphrodite flower. So that's it for the day, guys. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.